Demonstration from predictive econometrics analysis using R programming. Stay tuned till the end. This is a script where we have to write the codes and then we can save it. But क्या होता है ना, जब यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे ना, it will not execute until we are not allowing to run. So in the first, अगर हमें अभी जरूरत नहीं है, but we need the codes later, so we can just save it here. In the first. From the second pane, we can import the data set in Excel or SPSS or Stata, whichever the file we have. Then here we are creating variables. Okay, whatever we are doing is coming here in 2, like in terms of variables. 3 is console. Console is also same as pane 1 script. We are also writing codes here, but the difference is in script, the code is not executing until we are not allowing it. But in the third, whenever we are writing anything and putting enter, the code is executing and we are getting the results or the error. So everything error results will show under third page. Okay. Then fourth, we have here, we have the plots and other things as well. The major thing is plots. If we have the graphical representation of the data, it will showcase under fourth page. Okay. Actually, I'm a little bit aware of all these things. So the basic question with is like, what type of variable? 1, 2, 3, and 4. As I explained in the first sheet, there were 4 panes. So this is a script where I'm writing the codes and it is not saving. Okay. I just write it here. A is equals to 1, enter. B is equals to 3, enter. C is equals to A plus B, enter. Nothing is executing anywhere. Okay. Okay. But the save until I'm not running. So how to run this is A is equals to 1, and you see here run. Yeah. Run. Yeah. When I'm running, so you see the pane 3. See pane 3. जैसे ही मैंने वहां रन किया, it is automatically showing here. ठीक है. अब ये यहाँ शो कर रहा है, तो ये वेरिएबल बन गया है A, क्योंकि हमने A के अंदर 1 वैल्यू स्टोर कर दी है. तो जब हम कोई वैल्यूज या डेटा किसी के अंदर स्टोर करते हैं, तो दैट इज आवर वेरिएबल एक्चुअली. सो दैट वेरिएबल इज नाउ शोइंग अंडर 2, pane 2. Yeah. It is telling that's a numeric value. Yeah. It is now telling that A has one number. No, it's telling it's a numeric A. If you will go select it, it is telling that A has a 1 value and that's numeric. Because it's compatible with the word data. हाँ, yeah. ये तो हम होवर कर रहे हैं तो पता लग रहा है. Otherwise इसका एक अलग कमांड होता है to understand what type of data it is. So I'll tell you. Okay. Sure. उसके बाद ये B and C हम एक साथ करके भी रन कर सकते हैं, हम एक करके भी रन कर सकते हैं. तो I just do now like this. B3 C equals to 4. वो उसने सम निकाल के क्योंकि okay. था. ठीक है. Okay. अब ये तो हो गया फर्स्ट का. तो फर्स्ट इज यूजफुल फॉर स्क्रिप्ट टू सेव. सेकंड, वहां पे हमें वेरिएबल्स दिखेंगे. वी हैव अ ऑप्शन टू इंपोर्ट डेटा सेट हियर. ठीक है. उसके बाद थर्ड इज कंसोल वेयर वी आर राइटिंग. सो नाउ आई एम राइटिंग z इक्वल्स टू 5, एंटर. सी यहाँ सेकंड में z आ गया. अब मेरे को कहीं रन नहीं करना पड़ा. इट्स जस्ट हैव टू पुट एंटर और वो एग्जीक्यूट हो. ठीक है. द फोर्थ पेन इज अबाउट द फाइल्स which we have in our system. अगर कोई डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर रही है तो then plots जहाँ पे हमारा graphical representation शो होगा. Packages, these are the packages which are already there in my system. Okay. So many you have. Help is यहाँ पे एक बेस्ट चीज ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आया कि उसको किस फॉर्मेट में लिखना है. द क्वेश्चन यू आस्क, हम यहाँ सिंपल अपना पैकेज लिख सकते हैं, वो पूरा फॉर्मेट दे देगा. आई जस्ट राइट मीन न्यूमेरिक
character, and then logic. Numeric, you know, which are the Yeah. numbers. Characters is string variables, which we have done. Logic is true or Yeah, that's right. हाँ. Mhm. और अगर हमें कभी चेक करना हो कि जो हमने लिखा है वो वेक्टर है या नहीं है, ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं इज डॉट वेक्टर के कमांड से, और इसमें वो लिखो जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया. फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स बना है तो It is checked with the command of it is checked through the command of is dot vector. yeah. And what you have written in the brackets? x मतलब कोई x के अंदर अगर हमने बनाया. Okay. जब हमें ये तो हमने क्या किया था, x equals to 2, y equals to 3, तो z में फिर ऑपरेशन लगा दिया था जो भी हमें चाहिए, राइट. बट अभी तो ये सिंगल वेक्टर है, सिंगल एलिमेंट के साथ है. बट जब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए होते हैं, देन वी यूज द सी फंक्शन, सी, एंड देन इन द ब्रैकेट यू कैन राइट योर वैल्यूज 2, 5, -8 और C कोट्स. C function. नहीं विदाउट कोट्स. ये जो Okay. मैंने किया था, अगर मैं इसको दोबारा रीरन करती हूँ वो फिर भी नहीं लेगा. अगर मैं इसको नीचे वाले को कोट्स के अंदर वाले को रन करती हूँ तो इट इज एक्सेप्ट. हाँ, yeah. You have to put each हाँ. object in the quotes. तो Yeah. तो ये एक रीजन है. अगर हम विदाउट So, कोट्स कर देंगे तो वो नहीं लेगा. हाँ, लेकिन how do you define this apple red and 5? वो भी इसने बताया था कि you हाँ can define it. When we are running the OLS on time series analysis, the first step is that it has to be a stationary data. हाँ जी. वैसे तो यू शुड राइट व्हेनेवर वी रन एनी टाइम सीरीज टेक्निक, एनी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक इफ द सीरीज आर स्टेशनरी और नॉट. हमने अरीमा में भी जो किया था, ठीक है, हमने ADF लगा के ADF.com वाला सेम टेस्ट लगाया था. हाँ सेम यहाँ पे भी है, adf.test और वेरिएबल हमारा, ठीक है. In order to get this ADF, which is augmented Dicker Fuller test, in order to get these functions, which is the base package we should install? Which test? Stationary test? हाँ जी. Which package we have to install? Time series package? हाँ. Heaven? नहीं एक Heaven भी करना पड़ेगा नहीं क्योंकि नहीं, उससे ही तो डेटा आएगा ना. वो तो फाइल पे डिपेंड करता है कौन से फाइल से ले रहे हैं. अगर सास से ले रहे हैं आप, है. ओके. ठीक है. तो अभी इसके लिए अपने को सबसे पहला तो एक टी सीरीज पैकेज चाहिए और एक चाहिए LM टेस्ट. Which test? LM टेस्ट. जब भी हम रिग्रेशन रन करते हैं ना, वी ऑलवेज वर्क ऑन दिस LM टेस्ट. Okay. Okay. Second step is to check correlation. Okay. How to check correlation here? There is a function called core, and then variable square. So now the next technique we have is the ARDL, which is auto regressive distributed lag.
Okay, written. Yeah. So when we apply this, when our series is integrated either at 1 or at 0 level. You know, 0 level means when there is no need of differentiation. One integrated at 1 level means we have differentiated at 1 level. हम सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए डिफरेंस करते हैं, लॉग डिफरेंस, डिफरेंस. Are you talking about integration or differentiation, or are you talking about the stationary state? एक ही होता है. Okay. Done. Hope you have liked the video, so don't forget to subscribe. Also, if you wish to learn predictive analysis using R, visit edboomi.com or reach us on the given details on the screen. Bye.